Good evening, everyone. Welcome to BYJU'S Exam Prep. My name is Alpa Sharma, and this is the third class in the series that we have on assumptions and conclusions. Can you hear and see me clearly, everyone? Hi, Sakhi. Good evening. Am I clearly visible and audible to you? You could quickly confirm that. Good evening. Am I clearly visible and audible? Good evening, Navya. Can you hear and see me clearly? Good evening, Sanjoli. Good evening. Yes, clearly visible and audible. All right, so the third class in this series today. I hope you had seen the first two videos on assumptions and conclusions where I helped you understand the theory behind how to solve assumptions and conclusions correctly. I hope you have seen them because today we're going to be solving some questions applying that theory that I had taught you in the few classes. So before we start off with solving the questions, a few things that I need to take you through. We've got flat 20% off that's going on our platform. So if you wish to prepare for any of the law entrance examinations, this time becomes the best time because you can avail 20% off using this code SPRING20 on all our classroom programs and our mock test series as well. Don't wait, rush up, enroll yourself for all our programs. What our programs are. But before that, Sunday we have a mega marathon that's going to happen. And my slot is going to be 10 a.m. in the morning. Mega marathon 10 to 2, 2 to 4, and then we've got 12 to 2 as well. Multiple sessions coming up, so many questions to solve, so many reasoning to learn, so many theories to learn. Make sure you don't miss out on this mega marathon. Whole day we're going to study a lot of things. Mera slot 10 a.m. Remember, don't forget that. If you're targeting CLAT 2023, we've launched a new comprehensive course, the foundation module, because you have roughly 11 months left for CLAT 2023. That's going to happen in December. Don't be late. I'll be teaching in this batch as well, like all the 2023 batches. So jaldi se enroll kar lo. Best time hai because 20% off bhi chal raha hai. Apart from that, if you're targeting MHCT, ALET, SLAT, BLET, JAMIA, these law entrance examinations, because the course is a little different, in fact pretty much different from CLAT, there's a different batch that we have for it. This is batch 2 because batch 1 is already full. Don't wait because you don't have a lot of time left for these entrance examinations. And here comes our first crash course for CLAT 22. जल्दी से enroll कर लो. 3 months है, अभी भी time है, prepare कर सकते हो, नहीं तो बहुत late हो जाओगे. 20% off ले लो, enroll कर लो. And last but not the least, if you don't wish to study every subject but you want to study only legal affairs and current events, then batch 2, a booster course on legal affairs and current events is here. Nivedita ma'am, Abhimanyu sir, dono padhayenge legal affairs and current events. Look no further. Come right away, join the batch, start free trial right now. So that was all about our programs. Good evening, everyone. Yes, finally they have my photo here. Enroll kar liya hai, so I'll see you there, everyone. So आज start करते हैं आज का session. कुछ थ्योरी पढ़ाई थी मैंने लास्ट 2 क्लासेस में. आई एम श्योर यू हैव सीन दैट. आपको पता है assumption कैसे सॉल्व करते हैं, assumption क्या होता है, कंक्लूजन कैसे सॉल्व करते हो, कंक्लूजन क्या होता है. एक क्विक रिविजन 2 पॉइंटर्स में. assumption फाउंडेशन होता है क्वेश्चन का. कौन बनाता है assumption? क्वेश्चन मेकर, स्पीकर. कंक्लूजन कौन बनाता है? यू एज अ रीडर. कंक्लूजन कंक्लूजन ढूंढने का करेक्ट मेथोडोलॉजी जो 100% होगा ही होगा अगर क्वेश्चन करेक्ट है तो वो भी करेक्ट होगा. दैट इज योर कंक्लूजन. एन assumption वो जिसको निगेट करने से मेरा क्वेश्चन बेसलेस हो जाता है, दैट इज अ करेक्ट कंक्लूजन, करेक्ट assumption. सो ये दोनों चीजों में क्लैरिटी है सबको. assumption क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है. करना स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व. रेडी एवरीवन? लेट्स सी कितने लोगों ने प्रैक्टिस करी है इतने दिनों में. लेट्स सी कितने लोग अब करेक्ट कर सकते हैं. थम्स अप दे दो जल्दी से इफ यू आर रेडी फॉर द क्वेश्चंस. कैन वी स्टार्ट? यस. Yes, here we go. So our first question is here. Mark your answers in the chat box and tell me what it is going to be.
Okay, Manvi says D means neither. All right. C for Dave, that means both. Contradictory answers. Tommy says A. Saki says A. And then we've got B as well. सारे ऑप्शंस आ गए हैं, A B C D. चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं. कंक्लूजन निकालना है. कंक्लूजन निकालना है, राइट? कंक्लूजन वो होता है जो बिल्कुल होगा ही होगा अगर क्वेश्चन ट्रू है तो. ये टेक्निक हम यूज करते हैं. क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन सेज द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ बोट सर्विस बिटवीन सिटी ए एंड बी. बोट सर्विस स्टार्ट कर दी और इससे जो डिस्टेंस था ए और बी के बीच में वो डिस्टेंस रिड्यूस हो गया. उस डिस्टेंस के रिड्यूस करते ही जो स्पेंडिंग थी फ्यूल पे वो भी रिड्यूस हो गई. ऑब्वियसली बिकॉज डिस्टेंस रिड्यूस होगा तो फ्यूल का कॉस्ट भी कम लगने वाला है क्योंकि फ्यूल कम लगेगा. तो ये जो ए और बी सिटीज के बीच में डिस्टेंस रिड्यूस हो गया. पहले शायद रोड से ऐसे जाना पड़ता था, अब बोट सर्विस हो गई है तो इंस्टेड ऑफ 470 किलोमीटर्स अब वो 250 किलोमीटर्स की रह गई है. डिस्टेंस भी कम हो गया, फ्यूल कॉस्ट भी कम हो गया. अगर ये ट्रू है तो क्या वन एब्सोल्युटली ट्रू होगा? देखते हैं. बाय यूजिंग ऑल्टरनेटिव मेथड्स फ्यूल कंजम्पशन मस्ट बी रिड्यूस. मस्ट का मतलब क्या होता है? मस्ट का मतलब होता है होना चाहिए. यू मस्ट स्टडी, आपको स्टडी करना चाहिए. यू मस्ट सिट फॉर अ मॉक, आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए. ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करके फ्यूल कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाहिए. जरूरी है? जीके लगा रहे हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो? यस, रॉन्ग कंक्लूजन. A is going to be a wrong conclusion, my children. It's wrong. अगर यहां होता can be reduced तो मेरा आंसर हो सकता था A. आपने क्या किया? आपने वर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया. सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं जब वो क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व करते हैं वो मतलब अज्यूम कर लेते हैं. और जब आप अज्यूम कर लेते हो तो आप गलत कर लेते हो. क्यों अज्यूम कर लेते हो? जो लिखा है उसका मीनिंग निकालो. सेकंड ऑप्शन देखते हैं. ट्रैवलिंग बाय वाटर बॉडीज इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट चीपेस्ट वे टू ट्रैवल. अरे भाई, अगर एक लोकेशन ऐसी है वाटर बॉडी में ऐसे जाना पड़ेगा बट रोड से ऐसे जा सकते हैं तो क्या ऑलवेज वो शॉर्टेस्ट मेथड होगा, चीपेस्ट मेथड होगा? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं. हो सकता है फ्लाइट इज शॉर्टेस्ट एंड चीपेस्ट, हो सकता है रोड इज शॉर्टेस्ट एंड चीपेस्ट. Always makes this conclusion wrong. Our answer is going to be neither of them. Neither of them follows. Yes, D is going to be the correct answer here. Let's look at the next question very quickly. I hope आपको समझ में आया होगा सबको. Next question use करते हैं. ठीक है, ध्यान से पढ़ना, अब गलती नहीं करना. That's very good, साक्षी. Very good. कोई बात नहीं, कोशिश करो, आसान है. सिलोजिज्म यूज कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए अगर सिलोजिज्म आता है तो. ओके, B, both. ओके, एंड B. सिलोजिज्म आता है सॉल्व करना? सिलोजिज्म से समझाऊं ये क्वेश्चन? C मतलब बोथ, ओके, एंड देन B एंड देन A. ओहो हो, so many ways. Do you understand syllogisms, everyone? देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको. एंड देन C, बोथ, A, B, C, सारे आंसर्स आ गए. क्वेश्चन सेज कंक्लूजन निकालना है. ठीक है, अगर ये ट्रू है तो इनमें से कौन सा एब्सोल्युटली ट्रू होगा? दैट्स व्हाट आई नीड टू फाइंड. वन कैन मास्टर इंग्लिश लैंग्वेज ओनली थ्रू एक्सटेंसिव रीडिंग एंड कॉन्स्टेंट यूज ऑफ लैंग्वेज. दो तरीके से समझाऊंगी क्वेश्चन, सिलोजिज्म के थ्रू एंड एक्सप्लेनेशन के थ्रू. इसका सिलोजिज्म कैसे बनेगा? ओनली एंड ओनली थ्रू कॉन्स्टेंट यूज ऑफ
इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू राइटिंग एंड कन्वर्सिंग, ठीक है। तो राइटिंग और कन्वर्सिंग चाहिए अगर आपको इंग्लिश मास्टर करनी है तो, ठीक है। तो जो लोग मास्टर करते हैं उनको राइटिंग और कन्वर्सिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब पहला ऑप्शन क्या बोलता है, पीपल हु डू नॉट रीड इंग्लिश कैन नॉट मास्टर द लैंग्वेज फुल्ली। अगर कोई रीड नहीं करता है इंग्लिश तो क्या वो मास्टर कर सकता है लैंग्वेज? सोचो, क्या मैं रीडिंग को राइटिंग से लिंक कर सकती हूं? थिंक अबाउट इट। एग्जैक्टली, अप्लाई लॉजिक। अब ये बताओ, अगर मैं राइटिंग कर रही हूं और अगर मैं कन्वर्सिंग कर रही हूं, तो अगर मैं राइटिंग कर रही हूं तो क्या मैं रीडिंग नहीं करूंगी? करूंगी कि नहीं, ये बताइए। इफ आई राइट, विल आई बी रीडिंग व्हाट आई राइट? यस और नो? If I am writing something, will I be reading that or not? Think carefully. If I am writing something, will I be reading that or not? Of course I would be. तो राइटिंग के साथ साथ रीडिंग भी एक नेसेसिटी हो जाती है। एक्सटेंसिव रीडिंग शायद जरूरी नहीं है, लेकिन एक लिमिट की तो रीडिंग करनी ही पड़ेगी आपको। जो आप लिखोगे वो तो रीड करोगे ही। और ऑथर कह रहा है राइटिंग एक नेसेसिटी है। यस, इफ राइटिंग इज अ नेसेसिटी टू मास्टर दिस लैंग्वेज, automatically what you write is to be read by you and vice versa. That means writing, reading and conversing, all three are important parameters to master language. Automatically the first one becomes the correct one. Yes? Agreed? Does it become a correct one? Because it is a necessity, a necessary condition है. The second one, only reading is not enough. One needs to practice. ठीक है? और क्वेश्चन क्योंकि आपका बोल रहा है कि रीडिंग, कांस्टेंट यूज, राइटिंग, कन्वर्सिंग सब चीजें जरूरी है आपको। तो सिर्फ रीडिंग से आप मास्टर नहीं कर सकते, आपको राइटिंग भी करनी पड़ेगी और कन्वर्सिंग भी करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इंग्लिश मास्टर करने के लिए। अब इन तीनों में से अगर एक भी चीज मिसिंग है तो आप मास्टर नहीं कर पाओगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेकर। फर्स्ट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट कंक्लूजन। द सेकंड वन सेज only reading is not enough. यही तो क्वेश्चन बोल रहा है that only reading is not enough. You need to constantly use English by writing and conversing. So it's not enough you need to speak and write. Actually, to is a rephrasement of a. Not verbatim but rephrasement. So to तो certainly होगा ही होगा. And remember, there are three things that are necessary: reading, writing, conversing. One is not enough. We need to do all the three things. And if any one of them is missing, you cannot be a master of English because ये word used है. The answer is going to be both the conclusions follow. Got my point, everyone? Let's look at the next question. Question number 3. Here we go. Let's see who gets it. जल्दी से बता दो, आई एम स्टार्विंग। क्या होगा आंसर? Yes, Navya. A, okay. Manvi says neither. Muskan says both. Mohinder says B. इतने वेरिड आंसर्स क्यों आ रहे हैं? चारों ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास आंसर्स में।
क्या आप लोगों ने प्रैक्टिस करी मेरे फर्स्ट 2 क्लासेस के बाद? डिड यू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? क्वेश्चन आ रहा है समझ में क्या बोल रहा है? लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन. ACAD. Okay, let me explain the question. Okay, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कुछ क्वेश्चन किया, अजम्पशन निकालना है. कौन बनाएगा अजम्पशन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया, तो स्पीकर क्वेश्चन मेकर ही बनाता है अजम्पशन. अब क्या क्वेश्चन किया हमारे प्रेसिडेंट ने? ही क्वेश्चनड द यूजफुलनेस ऑफ स्पोर्ट्स साइंस डिग्री. ही सेड according to him sports science degrees are questionable, and he said that these degrees should be substituted. Substituted का मतलब क्या हुआ? Remove these degrees and use any other degree that is perceived of national necessity. देखिए, दो कैटेगरी बनाते हैं, ए और बी. ए था स्पोर्ट्स वाली डिग्री, ठीक है. दूसरी कैटेगरी उसने बोला, हमारे प्रेसिडेंट ने बोला इनको हटा दो. आई क्वेश्चन देयर यूजफुलनेस. इंस्टेड ऑफ दिस सब्स्टिट्यूट इट विथ अदर फील्ड्स दैट आर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. अगर इसको सब्स्टिट्यूट करके नेशनल इंटरेस्ट की डिग्रीज में हम अटेंशन देंगे, इसका मतलब ये नेशनल इंटरेस्ट का नहीं है, क्योंकि अगर ये नेशनल इंटरेस्ट का होता तो वो इसको रिमूव करके नेशनल इंटरेस्ट पे ध्यान देने को नहीं बोलते. इसका मतलब स्पोर्ट्स एक्सप्लोरेशन डिग्री डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इंपॉर्टेंट नेशनल रिक्वायरमेंट्स. अगर वो स्पोर्ट्स एक्सप्लोरेशन रिक्वायरमेंट को मीट करता मेरी नेशन की, तो मेरे प्रेसिडेंट इसको प्रमोट करते. उन्होंने बोला इसको हटा दो. ध्यान किस पे दो? नेशनल नेसेसिटी को प्रमोट करने वाली चीजों पे. उनके अकॉर्डिंग ये प्रमोट नहीं करती नेशनल नेसेसिटी, तो बी एब्सोल्युटली करेक्ट है. ठीक है, दूसरा देखते हैं. फर्स्ट वाला, एक्सप्लोरेशन शुड बी इंटेंडेड टू नेशनल रिक्वायरमेंट्स. निगेशन यूज करके देखे यहां, अगर एक्सप्लोरेशन नेशनल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो क्या हमारे प्रेसिडेंट ये स्टेटमेंट देते? नहीं देते. तो जो एक्सप्लोरेशन है वो नेशनल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए. यही वो बोल रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, नेशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करो. द आंसर इज बोथ आर गोइंग टू फॉलो. बोथ आर करेक्ट. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट? बोथ assumptions. प्लीज डू नॉट बी कंफ्यूज. एग्जाम में ऐसा ही होगा, रैंडम क्वेश्चंस आएंगे. एक assumption का होगा, एक कंक्लूजन का होगा, एक स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग का होगा, एक स्ट्रॉन्ग एंड वीक का होगा. रैंडम देख के मार्क नहीं करना है. आई एक्सप्लेन दिस अगेन नव्या. सो ओके, सो नव्या, द क्वेश्चन सेज द प्रेसिडेंट हैज क्वेश्चनड. जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप उस पर डाउट करते हो. ठीक है, किस चीज को क्वेश्चन किया? स्पोर्ट्स डिग्री प्रोग्राम्स को. ठीक है, और बोला स्पोर्ट्स डिग्री प्रोग्राम को हटा के उन पे ध्यान दो जो नेशनल नेसेसिटीज के प्रोग्राम्स है, जो नेशनल नेसेसिटीज के फील्ड्स हैं. पे अटेंशन टू देम. ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट द sports science degree programs, they don't surmount to be equivalent to the national necessities. That's option 2. Now let's look at option 1. Okay, no there isn't, Saki. That's related. The first one, the first assumption says that exploration should be intended on national requirements. The assumption has to be made by the president. Let's negate it. If the president believes that the exploration should not be intended on national requirements, will he give you this question? Yes or no? Will he give you this argument? Yes or no? For people who are confused with the first one, use the negation technique. Tell me, if he believes exploration should not be intended to national requirements, will he give you this argument? Yes or no? No, he wouldn't.
That means negation of first negates my question also. That means my question is dependent on, that's exactly what I'm doing, Tanisha. Negation of the question depends on the negation of the assumption 1. Okay? So that is what's going to be our answer. Both are going to follow. Next question. Question number 4, everyone. Negation method, remember, is the trick, the gospel that you have that you need to follow for assumptions. Think carefully. Okay, Sudiksha. Okay, Vatsala. Conclusion. Find out the conclusion. Everyone says A, unanimously. Okay, let's understand the question. Sakhi says C, that is either. अच्छा देखो, सबसे पहले तो either कब choose करते हैं? When both of them are contradictory to each other. Are they contradictory to each other? Cannot they be together, correct together? They could be. So I can't choose either. If I have an option both, then we can possibly consider this to be true. Let's understand the question. So a person says, take a recruitment system. For example, the company would make an offer to somebody it had rejected 3 months ago. 3 महीने पहले किसी को reject कर दिया है और उसको क्या मैं वापस ऑफर दे सकती हूँ 3 महीने बाद? नहीं. According to him, no. So let's make a recruitment system. Let's take a database that keeps record of people who were rejected before so that we don't hire them after some time. Can I say 3 months ago is only an example used by him to say that somebody who had been recently rejected should not be hired again? Yes? Now, it is possible to devise a system which would indicate those applicants who were rejected earlier? Yes, it is possible, because if it was not possible, he would not give you this suggestion. Agreed? So, 1 is absolutely correct, because something impossible would not be suggested to you. I would not ask you to work 24/7 because I know it's impossible. A suggestion would be dependent on certain factors, and one of them is that it is a possibility to undertake that suggestion or follow that. So the first one absolutely is correct. Now let's look at the next one. The next one says, this company considers 3 months time too short a period to consider recruitment decision about a candidate. 3 months is only an example that's used to express the fact that somebody who was probably rejected a few months back should not be hired again. Now 3 months is only an explanation to support the fact that they need a recruitment database where they could record everybody who were rejected. It has nothing to do with the conclusion that could be drawn from the question. Yes? So the answer is going to be A here. The answer is only and only 1 is implicit. Okay? Alright, let's look at the next question, everybody. Question number 4. Here you go.
Let's see who gets this correct. Conclusion. This is an easy one. So Navya, you have a very good point, my child. But can you eliminate A with that logic? So sometimes the question maker may make such a question. If you go to hardcore critical reasoning, technically your statement is absolutely correct. That implicit has to be something that's unwritten. Okay? And that has been written in the question. But sometimes what has been written can be rephrased in another words and the author will consider it to be implicit and you cannot eliminate that option. I talk from the perspective of the kind of questions CLAT and ALET makes, and they do this. So please do not counter the opinion the examiner has. You will have to mark that correct. If you go by hardcore critical reasoning and its fundamentals, your reasoning is absolutely right. But that's how an examiner in the competitive examination, we are targeting things. I hope you understand. And our aim is to get the answers correct in our examination. So we can't be arguing with them. The answer, most of you say A and D. Okay, let's see. The answer here is going to be neither. D. Most of you got that correct. Actually, both of them are pretty much not even related to the passage. So when it says 100 crore or 1000 crore company. Now this crore could be revenue, could be profit, could be turnover, could be anything according to me. Since it is not written, I cannot use my GK about this data being about the turnover. It could be revenue, profit, anything. Right? So this is my GK that I'm using. I can't do that. External knowledge not allowed. Wrong implication. The second one, there is hardly any distinction between a small or a big company. Yes, there is. It is technically the choice that an entrepreneur makes. So there is a distinction. The distinction is this. But you don't need to do this. Sometimes people do it. His suggestion is you don't need to do it. But does that mean there is no distinction? Yes, there is a distinction. This 100 or 1000 crore company gives you the distinction. You don't necessarily have to make that. Got my point, everyone? Yes? Correct. So the answer is going to be neither. All right. Okay, so let's move to the next question, everybody. Here you go. The last question of the class. ध्यान से. What's your question, Ravinder? D means neither. ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं. Most of you marking D or A. Let's understand the question. ध्यान से समझना, okay? For better health, have fruits instead of vitamin supplementing tablets. Okay? So, assumption has to be made by the question maker. And the question maker gives you a suggestion. He says, if you want to be healthy
instead of B, do A. Okay? If I try to compensate this by this, can I say its job can be done by this? Yes or no? If I try to compensate this by this, can I say its job can be done by this? Yes or no? Tell me that first. I'll do that today, Ravinder. I'll do that. Yes or no? बताइए. है? अगर मैंने आपको बोला कि मैथ्स की जगह इंग्लिश पढ़ लो तो मार्क्स आ जाएंगे क्लैट में, इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो जो मार्क्स आप मैथ्स में लूज करोगे वो आप इंग्लिश में गेन कर सकते हो. काम कॉम्पनसेट कर लेगा. एब्सोल्युटली राइट. सो इन दिस केस अगर विटामिन का काम, विटामिन सप्लीमेंटिंग टैबलेट्स का काम फ्रूट्स कर रहे हैं, तो फ्रूट्स आपको क्या दे रहे हैं? वो विटामिन ही दे रहे हैं जिसके लिए आप टैबलेट्स खा रहे थे. वो विटामिन आपको फ्रूट्स दे देंगे. मैंने आपसे बोला सप्लीमेंटिंग टैबलेट मत खाओ, फ्रूट खाओ. वो सप्लीमेंटिंग टैबलेट का काम फ्रूट्स करेंगे. क्या सप्लीमेंट करेंगे? विटामिन करेंगे. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि विटामिन नेसेसिटी है गुड हेल्थ के लिए. गॉट माई पॉइंट? द आंसर हियर फर्स्ट will certainly follow. Absolutely yes. Because if vitamins were not essential for good health, why would I ask you to substitute one thing over other? I say कार्डियो नहीं करो, जुम्बा कर लो अगर हेल्दी बनना है तो जो कार्डियो का काम था वो जुम्बा कर सकता है, ये भी बॉडी को फिट रखने का, जिससे आप हेल्दी बनोगे. राइट? सो एक चीज को सप्लीमेंट से मैंने दूसरे को किया. नो इट इज इन सखी, एसेंशियल है. निगेशन टेक्निक यूज करो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो. अगर विटामिन एसेंशियल नहीं होते तो मैं आपको इसको सप्लीमेंट करने के लिए ये क्यों बोलती? काम तो दोनों का एक ही है ना. एक को सप्लीमेंट करके दूसरी चीज सजेस्ट करी तो वो उसको कॉम्पनसेट करेगी, तभी सप्लीमेंट दिया मैंने आपको, तभी सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैंने आपको बोला, क्योंकि वो जो मिसिंग चीज है उसका काम ये चीज कर देगा. तो आप इसको कर सकते हो. जिम मत जाओ, घर में एक्सरसाइज कर लो. तो जिम की जो जॉब है वो घर में एक्सरसाइज कर सकती है. क्या? एक्सरसाइज. दैट इज नेसेसरी. सो दिस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. इसको गलत करने से ये भी गलत हो रहा है. द सेकेंड वन, विटामिन सप्लीमेंटिंग टैबलेट्स डू नॉट हेल्प एट ऑल. ये तो एक्सट्रीम हो गया. हेल्प ये भी करते हैं, ये भी करते हैं. ऑथर के अकॉर्डिंग ये प्रेफर करो बेटर हेल्थ के लिए. At all makes it wrong, my child. The answer is only and only A. Okay? All right? Yes? All right, guys. So, that is all for assumptions and conclusions. And I'll quickly answer this question because people had been asking me this. Ma'am, if I cannot afford coaching, how can I prepare on my own? Yes, there are things that you can do on your own. Please analyze the previous year questions thoroughly. Solve those questions on your own. Practice a lot. There's a lot of data available on our channel. Be regular with our classes. Watch them. We teach a lot. Some things that we don't teach you here on YouTube, do them on your own. You can make it happen. Yes, Ravinder, I think I've answered your question. If you're regular, you can do it on your own. You just need to see, our job is to teach you. You have to teach yourself in that case. Thank you so much, everyone. I hope you are never going to get assumptions and conclusions wrong ever. And I shall see you again 10 a.m. Monday morning or otherwise Sunday with our mega marathon. There's another important announcement that I'm going to make. I'm going to come up with a new variant, because the new variant term is in these days, not of COVID, but a new variant of the Hindu editorial classes on Monday. Surprise! Let's see what's going to unfurl. So, I shall see you everyone. I'm CLAT 22 में blood relation और sitting arrangement के questions
आएंगे, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं. Thank you everyone. Have a very good day. Good night. And I shall see you soon. Bye everyone.